And waiting for Apsara. Like that. Hi. Hello, hi. Yes. Okay. And where's your love? I'm waiting for my love. Oh, okay. Yes, I'm waiting for my love. I don't know where is she. Okay, I'm sure. She's coming. Oh, coming. Okay. Yes. I just told everyone that I'm going to interview you and of course Naina about sex, love and lesbians Yes. and all the great things in life. All the other great things in life, yeah. Okay, Yes. so before she comes in, yeah. So the point I just want to ask you this question. How does it feel for you just to start in your first major role is, every young, beautiful girl like you, I think would want to see for hot-looking guy and six-pack and maybe tall, handsome, and blah, 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 all that. And then you chose to do a film where you're romancing a girl. So what's that? I think that's the whole point of doing a film like this, because I want to break the stereotype, and I want to break that. I wanted to do something new. I wanted to do something more exciting, and I think seeing two girls as lovers is definitely more exciting and very different and very Come big. again. You said you're seeing as a girl that you want to see two girls is more exciting than to see a guy. You actually said that now. What is that? Okay, yeah, I think it's definitely in terms of cinema and in terms of visual. I think visually it is very beautiful to see two beautiful women romancing. I think I would love to watch a film wherein two actresses are in love, and I think that was my reason, because we always see a guy and a girl romancing. I think that's so typically done, and I think all the movies, have that. Why I'm very excited for this film. It's different. Yes. Okay, swear. But before, what do you call? ये film Oh, से my पहले lover is here. Naina's here. Okay. Yes. So, Where? Hi. We're missing you now. The miss duo you too, is sir. there. Yeah. Naina, I think should come more closer to her. Yeah. Okay. अच्छा एक आप दोनों के लिए एक small disclaimer है. I want to interview as just as a general audience and not as the director of the film, if you understand. No? So if you both are actresses in a film called Dangerous, which is releasing, I am asking you, interviewing you, and everything in relationship to a audience versus actors, एक point है. Okay. दूसरा point ये है कि as a man to two women, मेरा एक बहुत बड़ा complaint है. आप जैसे दोनों इतने खूबसूरत लड़कियां, if you are into each other, what do us poor men do? Hello, हमारा Watch it. I what? think that makes them less poor. Less what? Less poor in life about the situation. Yeah. Oh, like probably watch it. Okay, fine, fair enough. Yeah. So I was Naina, before you came, मैं ये पूछ रहा था अप्सरा को, पूछने वाला था कि पहली बार आप लाइफ में एक किस टाइम पे याद है कि लेस्बियन का नाम सुना है या कोई सेम सेक्स रिलेशनशिप ऐसे भगवान ने बनाया दो एक मेल और फीमेल को, इसलिए वो रिलेशनशिप नेचुरल है.
और उसके वगैरह कोई बहुत से नेचुरल फंक्शंस लाइक जैसे बच्चे पैदा होना, ये सब होता है. सो सेंचुरीज से ये प्रैक्टिस को व्हाई दे डिडंट वांट इट, बिकॉज इट लुक्स अननेचुरल. अगर चाइल्ड का पर्पस नहीं है तो कैसा, हाउ कैन दिस रिलेशनशिप हैपन, इज व्हाट द जनरल थिंग. सो माय क्वेश्चन इज, व्हेन यू फर्स्ट हर्ड अबाउट इट, एट व्हाट एज यू हर्ड? मैं आंसर दोनों से चाहता हूँ. पहली बार आपने कब सुना है कि ऐसा भी होता है दुनिया में? या So very closely, I think I've of course heard about it as a taboo, I would say, when I was in school, and you know, anybody who's a gay or a lesbian or anybody a transgender, I've seen people ill-treating them or mistreating them. That's what I've heard since childhood. No, my question ये था कि पहली बार जब, for example, I'll tell you my experience. Yes. When I was in my B.Tech engineering first year में था मैं, जब भी मेरा कई दोस्त थे, एक दिन मैं एक फिल्म को गया था और फ्रेंड के साथ, और फिल्म जब चल रहा था कि एक उसने मेरा नी के ऊपर एक हाथ डाला. तो मैंने सोचा I didn't really I mean notice it. I thought, well, casually it must be he's holding like it. He just slowly started taking the hand out. So when it reached my half thigh, I suddenly jerked. You know, उस वक्त I never heard. Whatever my age was, I don't remember, but I never heard that there is something called gay or homosexual. But just the very thought repelled me. You know, this is one point. Second point, कॉलोनी में एक रूमर था कि कोई जो आदमी है वो गे है. सो सब लोग उसको एक अजीब सा एक जैसे देख रहे थे. You know, it's almost like he doesn't belong to this world. So this is what I felt as a man about a gay. But first time when I heard about lesbians, that was not my reaction. You know, because psychologically, because I'm a man, I'm supposed to love a woman. Enjoy the beauty of woman. अगर दो है तो डबल धमाका हो गया मेरा, ऐसा था. Question the relationship. जैसे मैंने मैन और मैन का क्वेश्चन किया, मेरा एक नेगेटिव फीलिंग था. Same feeling I didn't get it in when I thought about when I heard about two girls. So my question to you is, would you feel the same about two men? Because I'm a man, it is in my interest to talk about. Naina. हाँ सर, मुझे याद है कि तब मैं बहुत छोटी थी, तो समथिंग मुझे कुछ मॉडलिंग के लिए किसी ने बुलाया था. तब मैं इंडस्ट्री में एक्टिंग के लिए नहीं आई थी. सो देन वो एक लेडी डायरेक्टर थे, तो उनका ऑलरेडी मैरिज हो चुका था एंड बेबी था. तो उन्होंने बोला यू आर सो क्यूट, तुम बहुत. तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे इनडायरेक्टली, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअली वो बोलना क्या चाहता है. तो वो था कि उनको गर्ल पसंद था, बट ऑलरेडी उनका मैरिज हो चुका था, बेबी था. बट मैंने बोला कि अब बोलना क्या चाहते हो? बोलता कि तुम्हें मैं सिखा दूंगी धीरे धीरे, स्लोली. तो उसका जो टच करने का जो फीलिंग्स था ना, मुझे समथिंग इज रॉन्ग लगा. कि फिर उन्होंने क्या किया, डोर क्लोज किया. तो डोर क्लोज करने के बाद उन्होंने बोला कि टच होता है ना कि यू आर सो क्यूट समथिंग. तो मुझे लगा ऑलरेडी मैरिज है, बट कैसे तो बोला कि डोंट वरी, मेरा भी हस्बैंड है, बट मैं तुम्हें स्लोली लेस्बियन सिखा दूं. उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा था डोर क्लोज, मैं कैसे निकलूं, बट कुछ भी करके मैं निकली. देन उसके बाद मुझे लगा ओह माय गॉड, मतलब ऐसे भी होते हैं. फिर सेकंड जब डेंजरस का ट्रेलर रिलीज हुआ, तो मुझे इंस्टा में SMS आया कि एक लड़की है जो मुंबई पे रहती है, उसका बॉयफ्रेंड है, बट उसको मेरे साथ एक बार किस करना है, एक टाइम, मतलब कुछ भी नहीं, जस्ट किस, नो सेक्स. मैं बोला मैं रियल में लेस्बियन नहीं हूँ, बट उसने बोला कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे किस करता, बट मैं हैप्पी नहीं हूँ, बट मुझे एक बार गर्ल को किस करना है. और मैंने दिस पार्टी में बहुत लड़की को किस किया, ड्रिंक. मैंने बोला ओह माय गॉड, ऐसे भी होता. अभी मेरे को एक थॉट आया जब नैना ये बता रहे.
अगर यही किस्सा जो नैना सुनाया पहली वाले किस्सा, जो अगर कोई एक मर्द ऐसा करता तो मेरे ख्याल से एक लड़की उसको थप्पड़ मारती है, मेरे साथ ऐसा बर्ताव करने से। लेकिन लड़की है तो थप्पड़ मारे ही, आई डोंट नो। अगर लेस्बियन नहीं हो तो भी आई थिंक यू विल बी कंफ्यूज हाउ टू रिएक्ट। मैं ये सोच रहा हूँ। क्या The situation is more under control when it's not a. मेरा ये पॉइंट है कि when a girl is doing it, a girl will be more understanding. ये मेरा चलो इसका फीलिंग्स है, अभी क्या करना है, या ये तो थोड़ा एक सिंपैथी फैक्टर होगा, एक टॉलरेंस लिमिट होगा। शायद लड़के के साथ ऐसा नहीं होगा, नहीं ना? करेक्ट है ना सर? नहीं होगा, मतलब या तो स्माइल आएगा या तो लगेगा कि प्लीज मैं आपसे बाद में बात करूं, ऑकवर्ड फील होगा। बट थप्पड़ आई थिंक इतना इजीली नहीं, वो भी किसी वाइज आंटी जैसा। बट विल यू डू इट ए बॉय? अगर यही काम कोई एक लड़का किया तो क्या करेगी? थप्पड़ मारती और उससे ब्लॉक कर देती कभी। ये बहुत है हमारे साथ, बहुत नाइस है। कोई अगर किसी का फीलिंग अगर क्या ज्यादा से ज्यादा जो एक्सेप्टेंस है मेल को फीमेल के लिए ऐसा फील होना, ये तो नेचर का ऑर्डर है। उसमें तेरे को गुस्सा के थप्पड़ मार दिया और जहां नहीं आना चाहिए उधर तेरे को सिंपैथी, इसका मतलब क्या है? सर वो लड़की आई मीन आंटी जैसी या मम्मी जैसी होगी तो थप्पड़ जो भी है अरे वो ठीक है, वो तो एज के ना। ओके, एनीवे द पॉइंट। अप्सरा, नाउ यू टेल मी। अच्छा एग्जांपल सर, एग्जांपल अप्सरा अगर मुझे बोला कि नैना आई मिस यू समथिंग, मैं अप्सरा बोला अरे अप्सरा प्लीज, अरे सर ये वाला फील होता है। लड़की अगर बोलती है कि आई मिस यू, she will understand, she will try to understand my feelings more. अगर लड़की है तो अगर यहाँ पे कोई लड़का होगा, मैं बोलूँगा ए प्लीज चल बाद में बात करेंगे, तो वो वाला हो जाता है। तो इसका पॉइंट है कि आप सब लोग साथ मिले हुए हैं, एक ही flock, birds of the feather flock together, और हम क्या बोलूं? Sir, it's just that I think women are little scared of men because men are more desperate. That's the whole point. Wow, so women will be more smartly approaching. That's what you're saying. Yeah, more subtle, more. Yeah, I got it. I got the point. Yeah. So now coming back to my first question. So Naina said those जो भी experience है. So when you and all this time, when did ever एक लड़की did she make a pass at you? कभी ऐसा? Yeah, actually a girl did. This was when I was in college and I was actually very sensitive about it. And I cried when I met my friend. I cried because she was trying to be a little touchy with me, and then we were partying. It was my friend's birthday party. It was in a farmhouse, and all my college friends were there. And this girl was constantly hitting at me, and I got embarrassed. And she was trying to dance with me, and this female's boyfriend was there. But even then, she was hitting at me, and I was telling her boyfriend, you know, your girlfriend's like hitting on me, and she's making me uncomfortable. But she was a little drunk, I think, and she was constantly telling me, you're so beautiful, and I think I'm in love with you, and she was drunk, so I don't know, probably she was a bi, but I think that's not a right approach, and I personally, I know a lot of gays and lesbians who are not like that, you know, you can actually be very good friends with them, and they will only hit on somebody who, if the other person also kind of interested, and they getting some signals, and not everybody is like that. So I don't want to put it in a wrong way, but yeah, some incidents happen. I was very sensitive. Honestly, I cried back home, and I got really nervous about it. Now for my next question, जितने भी लोग आज तक डेंजरस के ट्रेलर या गाने देखे, वो लोग सब 100% उनको कन्विक्शन है कि तुम दोनों एक कपल है, नहीं तो इतनी इंटेंसिटी और इतनी ऑनेस्टी से इट कैनॉट हैपन, यू नो. सो माय क्वेश्चन इज दैट. तो आपका आंसर क्या है? आई थिंक हम दोनों बहुत like an audience I'm talking, you know,
अभी क्या 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 गुफ्तगू चल रही है क्या? नो हाँ सर, हाँ मैं क्या सर, बोल रहा हूँ? हमारे बीच में प्यार है, है? हम लोग चल रहा है सर। Can I tell you something? If हमारा that प्यार is हो true, चुका है। okay, is true, I think you are the most beautiful lesbians I saw in my entire life. I watch a lot of lesbian videos incidentally. That is the reason I know. I think it is just super, fantastic. Oh, अभी पता चल गया. So all this time, नहीं, thanks. I love it. All this my एक black like a chutiya, I was thinking you guys were acting. इतना अच्छा actors मिल गया, luck हो गया. और मैंने सोचा अरे बिना not being lesbians you can act like this. I thought the performance. अरे अभी खोल दिया. ये है. Now you know the truth. Unbelievable, man. I love it, and everybody love it. Yeah, this is the greatest confession on screen. I love it. Yes. Yes. So there is actually a lot of love between us. One is you'll make all the men jealous and women also jealous. That's what it did. Super. But, I'm so happy. Yeah. Let's take a drink. Because we believe in love and we are trying to spread love. I love it. And actually, I hope you didn't forget all the questions that you came with. yes, I did actually. I think audience का answer मिलता होगा. For the first time, I will never get tongue-tied in my life. For the first time, it happened to me just now. Okay. Anyway, I just love it. So now the point is, when I approached you, Apsara, your first person approached for this role, and then immediately said yes. And like you said, Naina took a long time. So Naina, my question आपके लिए ये है कि, is it because you liked Apsara, you agreed to do the film, or is it that you fell in love in the making of the film, or what? What? बताओ. Sir, क्या आंसर दूं? Question आपको है नैना गारू. Sir, 3 answers. First, मैं आपको respect करती हूँ, and second, अप्सरा बहुत friendly है, इसलिए काम करने में easy होगा. Third, कुछ नया एक्टिंग सीखने के लिए चांस मिलेगा. नहीं मेरा क्वेश्चन ये था कि आप ओके, यू रेस्पेक्ट मी, यू एग्रीड, दैट्स फाइन, बट व्हेन यू सेड नो, ओके फाइन, बट थोड़ा अगर ये 30% है, 30% कुछ और है, मे बी यू लाइक द स्क्रिप्ट, और 30% इज इट बिकॉज यू लाइक अप्सरा? वो मेरा क्वेश्चन है. कुछ ना कुछ तो परसेंटेज तो होगा ना. अभी यू ऑलरेडी सेड दैट 30, 20, 40 जो ऑडियंस सुनेगा, मैं लेस्बियन हूं, अगर मैंने बोल दिया हाँ अप्सरा को लाइक अरे नो इट्स बट इन आई बॉयज पसंद है, मैं स्ट्रेट हूं. ये अप्सरा को पसंद है, फ्रेंड मतलब फ्रेंड रियल ब्रोस, बट वो फीलिंग्स नहीं है. मैं आपको एक सीक्रेट बोलता हूँ अप्सरा के. आपको इस फिल्म में कास्ट करने का आइडिया अप्सरा का था. अप्सरा ने फॉरेन यस बोल दी. क्या उसके बाद I agree because करेक्ट. सर आपको लगता है कि मेरा इसको नैना को इन्फ्लुएंस करने का जो डिसीजन था 101% सही था. आप एग्री करते हो कि नहीं? यस ऑफ कोर्स. या सर इसकी वजह से प्रॉब्लम इसकी वजह से सर इसने हाँ बोला तभी जाके प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, नहीं तो मैं ऐसे भाग रही थी. यस मुझे पता है. तो मेरा पॉइंट है, अप्सरा को मैंने पहली बार स्टोरी सुने फौरन हाँ बोलती, तो मेरा माइंड में ये था कि अगर अप्सरा भी अभी स्टार्ट हो रही है करियर में, ऐसा एक कंट्रोवर्शियल रोल है,
जो सोसाइटी में उसके फैमिली क्या बोलेगी, उसके फ्रेंड सर्कल क्या बोलेंगे, ये सब डर तो होएगा कुछ ना कुछ, तो मैंने ये सोचा. लेकिन the way she accepted, I really was surprised. उसके बाद जब हम कौन सा अदर गर्ल कौन सा, तो पहली बार अप्सरा ने, it has to be Naina, no one can do better acting than Naina, you know. Because Naina, because sir, हम लोग एक्चुअली नैना, हम लोग कुछ एक्टर्स से मिले थे भी, एंड आई थिंक सर मिले थे, और मैं नैना से मिली थी. आई जस्ट फेल्ट दैट द वे शी कैन डू इट, nobody else would do it, because she believes in performance, and also we had developed a kind of friendship while we were shooting for Thriller, so which is why I thought she's so good looking, and I think it would be the best for our movie. Yes. And also, Apsara, I'll tell you one more point. Even आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं एक बात बोलूँगा. As a director, I believe in only context of Dangerous में, Naina's performance is far superior to you. I'll tell you why. Because you are playing the role of a girl. Naina जो लड़की और लड़का का रोल कर रहा है, उसका बॉडी में के अंदर से आके चेंज करके, that is more difficult. That is not to say you can or you cannot. That is not the point. Only tell the context of the film, you know. Absolutely, sir. Which is why I thought, अगर ये character करना है कोई, you know, a new girl, I was not sure if a new person could do it, but she is very experienced. She knows how to handle camera. She knows how to handle the character. She exactly gets into the character. And this is so out of the box, because वो normally बहुत ही girlish है, बहुत ही एक लड़की टाइप है, लेकिन मूवी में हम लोग उसको बहुत ही अलग तरह से देख रहे हैं. तो उसका जो एक्सपीरियंस है, जो इतने मूवीज उसने किए हैं, is that right word you said? She's so girlish in real life. Yes. Giggling, smiling, all that, and then suddenly she looks like a stoic personality. She looks like a whole different person in the movie. Her character is completely different. Like, she adapted to that and she absorbs that. And I think when I met her, and as a you know, as an actor, हम लोग की काफी बात होती थी. I think lunch पे, शाम को चाय वगैरह पे, तो हम लोग जो हम लोग बात करते थे कि किस तरह की मूवी करनी है, क्या करना है. तो जिस तरह से obviously she has worked more than me, तो I used to tell her कि तुम मुझे क्या चाहती हो कि मैं क्या सीखूँ. तो मेरे को काफी पॉजिटिविटी मिला था उस टाइम पे, और उस वजह से आई वांटेड कि जो मेरी पहली डेब्यू मूवी आ रही है, आई वांटेड द बेस्ट थिंग टू हैपन, which is why I was behind her. and हम जिम भी करते थे, तो मुझे याद है मैं उसको पकड़ के कन्विंस कर रही हूँ outside the gym. सर मुझे कहानी याद आया, ये जो था कि आप लोग का ऑडिशन चल रहा था डेंजरस का, और हम लोग कहीं और प्रोजेक्ट के लिए आई मीन चिल कर रहे थे, मतलब और ऐसे. तो मैंने ऐसा फील किया कि अप्सरा मुझे इसका मतलब ऑब्जर्व करता था, यार ये होनी चाहिए, मैं उससे बात करता था, तो वो फीदा वो वाला एक कहानी बन गया मेरे लिए. लास्ट में बोला नहीं मुझे नैना ही चाहिए. और आई Yes. Okay. You remember, sir, after Thriller when we, जब भी आप एक दूसरे के बहुत नजदीक आ रहे तो फोन गिर जा रहा, मेरे को पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है. Okay. Yes, I noticed that. The phone also is jealous. Out of focus हो जा रहा. Yeah. अच्छा अभी. You know, sir, मैंने नैना को कन्विंस करने के लिए, you don't know this is between us. Nobody knows this. तो हम लोग जब मैंने थ्रिलर शॉर्ट फिल्म का हम लोग शूट के बाद, हम लोग आई थिंक सारे क्रू सब लोग बैठे थे, सब लोग आई थिंक डांस कर रहे थे, ऐसे एंजॉय कर रहे थे. तो मैं नैना को लेके गई, मैंने बोला इतना टफ नहीं है, एंड आई गेव हर अ पेक, like a sweet peck, and I told her it's nothing, this is, nobody knows, this is before the film. She had got a kiss from me already before she said yes to the film. Wow. And I told her इतना कुछ नहीं होने वाला, हम कर लेंगे, I trust me. आपका सर मैंने उस दिन फर्स्ट फील किया कि गर्ल किस करके क्या होता है, क्या फील हुआ, कुछ भी नहीं, नॉर्मल फील हुआ. हाँ, तो उसको कन्विंस करने के लिए मैंने उसको एक किस दिया था. You don't know this, now you know it. I'll tell you,
time, I mean, I actually realized, see, a man likes a girl. I mean, a boy likes a girl also likes a girl. Oh, context, pehli baar, where I got that from? When I was very, very young, I mean, maybe I must be maybe 10. I'm not sure because I was definitely not sexually awakened at that time. So, मेरी mother ने किसी से बात कर रहे थे और मैं था उधर रूम में. उसने किसी से बोल रही थी कि दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज एक लड़की होती है. एक अजीब सा लगा मेरे को इसलिए कि because I was not sexually awakened, I didn't understand the context. लेकिन अगर God ने या नेचर ने ये बनाया कि लड़का को लड़की अट्रैक्टिव होना चाहिए, लड़की को लड़का अट्रैक्ट होनी चाहिए, ये the law of the nature, ऐसा हम समझ के गए तो why is my mother saying the most beautiful thing is woman? Actually, in reality, the man should say that, and then the woman should say the most beautiful thing is a man. Yes. As per logic. But yes. I don't think my mother was a lesbian. I'm not sure because I don't speak to that about it. But the fact is, it proves that a woman enjoys a woman's beauty as much as a man. That is the point. Yes, that's true. That's actually very true. Yes. So honestly, yeah. I check out hot women more than I would check out a guy. I think a hot woman is definitely more attractive than a hot guy. I will give one more proof for that. Every man loves to see the picture of a nude woman, including painters. When there were no photographs, cameras, from the time of the great painters, जो भी hundreds and thousands of years पहले जो paintings होते थे, nude paintings, nobody paints a nude man. That's the point. Because woman is I mean, what do you call art? Woman's painting is an art. Man's painting cannot be by definition. Probably when God created men, he was in a hurry or something. What? When he created women, he had all the time of the world. It's not hurry. I think God also likes women. And I think God created men to service women. This is my theory. I agree. Because a woman is such a special thing. She needs a slave or a servant. That is the reason man was created. But उसमें एक गलती ये हो गया कि अगर उसको woman को protect करना चाहिए तो उसको strength होना चाहिए. उसके लिए woman से man को strong बना दिया physically, and those bastards misuse it and try to abuse women. That is God's mistake. Yes. How do you like my theory? I absolutely like it and I agree to it. And I'm sure that not all the men, there's few men who are probably misusing it, but a lot of them are actually gentlemen and protecting women. And I can see the change in the society. And men are actually trying to be the slaves. Yes. Trying to solve men. Forget. Apsara, I'll give one example. जो भी कितना भी strong है, powerful है, अब ये human being को तो छोड़ो. Did you see a lion, the most powerful animal in the forest? In front of a lioness, it looks like a billy. Yes. It completely loses its strength, and it is kingliness, and its roar, no roar. Kui, it starts doing like a billy. Yes. That is the power of a woman's beauty, Yeah, female beauty in the context of the lion. Yes. Yes. That, Okay, now coming back again to dangerous, So, when I first told you, okay, when we had multiple discussions, Apsara, I said, okay, no, I'm saying you have to just see, you have to ask your mom or your family what they'll feel about you doing the role. And of course, your mom is, I think, even more advanced than you in terms of her vision and her advancement in thinking and everything. But I like that one thing you said recently to me. Even if she said no, I would have done it because it's my duty as a daughter to discuss with her. But eventually, it's my life. I take a decision. Yes. That's true. I would still have done. Yeah. So, Naina के बारे में मैं सुनना चाहता हूँ because when I first told Naina, she was so this and that, and I
नैना खुद ने बोली है कि when she discussed with her mother, बोले अगर आरजीवी सर बोल दिया तो उनको ट्रस्ट करो, you know? वो जो भी सोचते हैं अच्छाई के लिए सोचता है, ऐसे कुछ नैना जस्ट टेल मी व्हाट आपका डिस्कशन मदर से. सर जब आपने ये डेंजरस सब्जेक्ट दिया तो मैं आई मीन होल नाइट मैं स्लीप नहीं हो पा रही, फुल टेंशन. मैंने इतने मतलब कोई भी प्रोजेक्ट में इतना टेंशन नहीं करती, मतलब मुझे लगता है ओके देन ओके, बट ये फर्स्ट ऐसा कोई प्रोजेक्ट होगा जो होल नाइट डे करूँ यस नो यस ने ऐसे थी. सो मैंने कुछ फ्रेंड से बात किया तो सब अपने अपने ओपिनियन दिए. तो लास्ट में मैं अपने मॉम और सिस्टर से बात किया तो मॉम ने एक ही चीज बताया कि मैंने स्टोरी बताया. मैंने बोला कि आई मीन लोग क्या कहेंगे, पब्लिक क्या बोलेगा, आई मीन एक लड़की. तो मॉम ने एक ही चीज बताया कि जब आरजीवी सर ने कुछ सब्जेक्ट तुम्हें दिया है सो उन पे ट्रस्ट करो. और वो सब्जेक्ट क्योंकि अभी तक तुम्हें जितने सारे सब्जेक्ट दिया है सब अच्छे हैं तो उन्होंने कुछ सोच के बोला होगा. देन मेरी सिस्टर को मैंने बोला कि ऐसा एक सब्जेक्ट है तो मेरी सिस्टर ने बोला कि तुम बहुत सारे एक्टर को किस करते हो राइट, तो इसमें तुमने अगर गर्ल को किस कर दिया तो प्रॉब्लम क्या है. और वो तो अच्छा है ना, लड़की है मतलब सेफ जोन है. ऐसा तो नहीं कि बॉयज को अगर तुम किस नहीं करते तो ओके, पर तुमने गर्ल के बॉय की जगह गर्ल को किस कर दिया. और ऐसा तो नहीं फुल मूवी में किस है, लिटिल आई मीन 2-3 सीन में किस सीन है रोमांस, उसके बाद तो फाइटिंग. बट मैंने बोला कि मैं कैसे करूंगी, तो उसने बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें करना चाहिए. तो जब फैमिली ने मुझे माइंड पे थोड़ा सपोर्ट मिला देन उसके बाद थोड़ा सा मैंने रिसर्च किया कि ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो जिसने गर्ल गर्ल किस किया है, बॉय बॉय किस किया है. तो तब जाके सर एक माइंड से, क्योंकि ये ऐसे टाइप के प्रोजेक्ट करने के लिए माइंड स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है कि हाँ मैं कर सकती हूँ. तो तब जाके मैंने बोला कि ओके डन. सब जब क्योंकि मुझे नेगेटिव किसी ने आइडिया दिया ही नहीं, सब बोल रहे कि पॉजिटिव. इनफैक्ट मुंबई पे भी अगर मेरे कितने ये सोचिए कि अभी अगर सब अगर क्या बोलते हैं, अगर कोई पूछा अगर फिल्म का ट्रेलर या फिल्म आने के बाद तो ऐसे रोल कैसे कर सकता है, अगर कोई पूछा तो व्हाट विल बी योर आंसर. ऐसे नहीं अभी तो हो गया अब सब बात किया, लेकिन उस वक्त डिसीजन लेने के टाइम पे डिसीजन लेने के बाद तो सब कुछ आसान हो जाता है. डिसीजन लेने से पहले 100% मैं करना चाहता हूँ. अभी उस वक्त भी हम सब लोग या तू या अप्सरा या मैं, हम सब लोग ये सोचते हैं वो टाइम पे इसका नेगेटिव रिपरकशन क्या हो सकता है ऐसा रोल करने से. मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि मुझे मेरा पूरा करियर में एज ए फिल्म मेकर और उसके पहले जो मैं आई मीन एज ए फिल्म वॉचर बिफोर मेकिंग ए फिल्म मेकर, मैंने एक पॉइंट में जान लिया कि अगर एक एक्टर ऑडियो नहीं आ रहा है. अगर किसी को क्या प्रॉब्लम क्या होता है, एक्टर कौन सी रोल किया किसी को प्रॉब्लम है, और रोल कैसे किया इज द पॉइंट. वो उसको कन्विक्शन. जैसे बेसिक इंस्टिंक्ट नाम का फिल्म में बहुत बड़े हॉलीवुड सुपरस्टार जूलिया रॉबर्ट्स, जेमी मूर, ये सब लोग रिजल्ट किया. शैरन स्टोन नाम का नया एक्ट्रेस उस वक्त, she said that international star. That is not the point. क्या है? The point is conviction से. इतना एक conviction से कि शैरन स्टोन की the माइकल डगलस जैसा हीरो उसके सामने फीका पड़ा. So that is what the power of conviction is, and I want to just thank you so much, both of you, for trusting me, and that I will do. I mean, I will present your love well. Okay. Thank you sir. Exactly. आपने ट्रस्ट किया कि हम ऐसा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हम दोनों कर सकते हैं. तो उसके लिए थैंक यू. मूवी आपने हमको दिया उसके लिए आई थिंक हम थैंक्स तो कभी इतना कर नहीं पाएंगे, बट we don't have words to thank you now because okay, forget thanking each other. I mean, I think that see, लोग जो भी अब लोग देख रहे हैं लाइव स्ट्रीमिंग को, they will enjoy it more if you want to give galis to each other. Anybody wanting to thank each other is the most boring thing for them. So let's forget that. हम लोग कुछ सवाल कर सकते हैं आपको? Yes, please do.
अच्छा सर, आप जब डेंजरस प्रोजेक्ट लिख रहे थे, आई मीन सोच रहे थे कैसे प्रोजेक्ट करना है, तो आपने क्या सोचा था? आई मीन आपको कैसी गर्ल्स चाहिए होगा जो आपके प्रोजेक्ट में परफेक्ट होगा? हम लोग, आई मीन आप इतना बीच के अप्सरा होगा या मैं, आई मीन जब आप लिख रहे थे। ये गुड क्वेश्चन है. I like the question you asked. एक पहली मैंने वेरी फर्स्ट टाइम मैंने एक डिसीजन लिया कि ये फिल्म मैं क्यों बना रहा हूँ. आई एम नॉट मेकिंग फॉर LGBT कम्युनिटी. LGBT क्यों कम्युनिटी वो पॉइंट है. यू नो, यस दैट एस्पेक्ट केम फ्रॉम एक तरह तरह की लोग, जो लोग फील, उसका फीलिंग्स अलग होता है. वो एक नेचर में या भगवान का ये जो भी हुआ है उसके अंदर से एक, फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी एक औरत के साथ प्यार करता है, तो कई बार हम सोचते हैं कि ये इसको कैसे शादी कर लिया. बहुत सारे चीज हमको समझ में आता, लेकिन वो उसका अपनी फीलिंग है. उसका अपनी फीलिंग हमारे फीलिंग से मेजर करके जज करना, इट इज फंडामेंटली रॉन्ग. एक पॉइंट है. सेम थिंग एक्सटेंड्स टू हियर. अगर गे रिलेशनशिप में इसको ये कैसा पसंद है, नो कैसे कर सकते, अरे मर्द मर्द और या औरत औरत, नो. लेकिन वो उनका फीलिंग, अगर तू वो जगह पे नहीं, तो सेम थिंग विल एक्सटेंड टू एक पुतिन और हिटलर जैसा आदमी इतने लोगों को मार देता है. हम तो नहीं मारते ना, लेकिन वो उसका फीलिंग है, हमारा फीलिंग है. तो ये हमको प्रोटेक्ट करने का हमारा अधिकार है, लेकिन दूसरा पर्सन का फीलिंग का जजमेंट करने का अधिकार नहीं. ये पॉइंट. सो इसी हिसाब से मैं कई बार मैं बोल चुका हूँ, ये कोई नई बात नहीं. मैं पॉर्न बहुत देखता हूँ. पॉर्न में मुझे लेस्बियन वीडियोस बहुत पसंद है. ओके, इसलिए कि जो ब्यूटी, उनकी जो फीलिंग है, उनकी जो एक इंटेंसिटी है, उनकी जो सेंसुअलिटी है. बिकॉज इन अगर हेट्रो पॉर्न में मैं सिर्फ लड़की को देखता हूँ, लेस्बियन पॉर्न में दोनों को देखता हूँ. आप समझ गए? थैंक्स. ये पॉइंट. सो मुझे, लेकिन मैंने अभी जो कहा कि आई एम नॉट मेकिंग फॉर LGBTQ, बट आई बिलीव दिस विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट केस फॉर LGBTQ. इसलिए कि जो भी आज तक फायर नाम का फिल्म बनी, जो भी दूसरे फिल्म, वो सब एक कम्युनिटी को एक पैटर्नाइजिंग दृष्टि से एक अरे ये कुछ अलग लोग हैं यार, हमको भी इसका भी ख्याल करना पड़ता है यार, अभी देख लो तो ऐसा मत बोलो उनके बारे में, ऐसा एक पैटर्नाइजिंग और शेमफुल एम्बैरेसिंग व्यू से बात कर रहे. तो मेरा ये सोच था डेंजरस में, अगर एक मैन वुमन का लव स्टोरी है, वो लव स्टोरी हो सकता है या क्राइम स्टोरी हो सकता है, थ्रिलर हो सकता है, हॉरर फिल्म हो सकता है, जो भी. लेकिन अगर स्टोरी में मैन वुमन के बीच में रिलेशनशिप कोई एक्सप्लेन ही नहीं करेगा, इसलिए कि सब लोग टेक इट फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं कि अच्छा चलो मर्द है, उस दोनों में प्यार हो जाता है. मैं उसी तरह, जैसे आप दोनों जानते हो कि डेंजरस इज नॉट ए सेक्सुअली थीम्ड फिल्म, डेंजरस इज नॉट एडल्ट कंटेंट, डेंजरस इज अ क्राइम ड्रामा वेयर lead pair happens to be lesbians. Yes. So this is the height of normalization. Yes. Of normalization, इसलिए कि I'm taking it for granted they are also the same as us. I think that's the best part about the film. ये ऐसा बनी, अप्सरा उसलिए ऐसा बनी, अरे उसको बंद कर. अगर मैन वुमन में तो हम एक्सप्लेन करेंगे ना, मैन का क्या ऐसा एक अंग होता है, वुमन का ऐसा होता है, इसलिए नेचर में ये बायोलॉजिकल फंक्शन है. कोई एक्सप्लेन करता है? कोई नहीं करता. You take it for granted that is supposed to happen, acceptable normal behavior. That is the same thing I did in Dangerous, you know. So that is one point. Second point is that I wanted definitely to cast beautiful looking girls. Why that is? Because in a regular commercial film, always the stress will be
hero should look good, heroine should look good, because film is a visual medium. उतना बड़ा पर्दे पे हमको अगर एक इमेज देखना है तो they should look good, एक visual appearance, they should be easy on the eyes, and they should evoke a desire in the theater. Yes, absolutely. Yeah. So emotion, correct? Emotion is a thing which has to be there. Good looks don't work without emotions. Yes. But if I'm given the choice between emotions with bad looking people, emotions with good looking people, I will take the second, without a doubt. जैसे आपको गाड़ी में जाना है, सबको गाड़ी तो सब गाड़ियां जाते हैं, अब मर्सिडीज और मारुति का बीच में आपको क्या है, मर्सिडीज चूज करेंगे ना, that's the point. Yes, yes. I think everybody would agree to it. मैंने कभी सुना है कि अरे खूबसूरत, ब्यूटी इज नॉट एवरीथिंग, इट इज स्किन डीप, मन चाहिए. करेक्ट है, वो हमें बिल्कुल उससे ये नहीं बोलो, लेकिन मन के साथ तो बेटर हो जाता. लुक्स मीडियम चलेगा, पर दिल क्लीन होना चाहिए. क्या 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 क्लीन? लुक्स ओके चलेगा, बट दिल साफ होना चाहिए. सर मेरा ये मानना है कि लुक्स ओके, आई मीन होगा, पर दिल क्लीन होना चाहिए, साफ होना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल क्लीन का मतलब मैं जाता हूँ, मैं तो डर्टी चीज पसंद करता हूँ, तो क्लीन का मतलब दिल मैं अच्छा होना चाहिए. दिल अच्छा होना चाहिए. मतलब अगर मैं कोई लड़का, कोई बॉय को चॉइस करूंगी, इतना हैंडसम ब्यूटीफुल नहीं, ओके, बट दिल अच्छा होना चाहिए, टेक केयर वाला होना चाहिए. अरे मेरा पॉइंट है, दिल अच्छा का मतलब क्या है, वो तो समझाओ ना. अरे तुम दोनों खूबसूरत लड़कियां हैं, देखो अगर हम मर्द लोग देख रहे तो अच्छा दिल का मतलब क्या है, ये बात बताओ. सर ऑनेस्ट होना चाहिए. ऑनेस्ट मतलब अगर किसी लड़का को प्यार किया तो ऐसा नहीं कि मुझे छोड़ के भी किसी और गर्ल के साथ फ्लर्टिंग करे. मतलब अगर मेरा लव है मींस मेरा ही लव है, आई मीन ऑनेस्ट लव चाहिए ना. वो फीलिंग है ना. अरे मेरा उसमें मानता नहीं. इसलिए कि प्यार किसी एक को किसी और को तब तक होता है जब तक उसको कोई और ना मिले. ये पॉइंट है, बिकॉज ये फीलिंग का चक्कर है. अगर नॉर्मली है, हमें कांटेक्ट कर लेते, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट हो सकता है, कोर्ट हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन इमोशन इज ए फीलिंग. सर मुझे और एक सवाल करना है. नो मैं एक मिनट. अगर नैना आपके बॉयफ्रेंड, उसका अच्छा दिल है, चलो अच्छा बॉडी है, कल सुबह आपको इससे भी अच्छा दिल मिल गया, बॉडी को तो छोड़ो, उसका हैंडसम लुक्स को भी छोड़ो, इससे भी अच्छा दिल मिल गया, तो इसको आप टटाटान कर देंगे ना? नहीं सर, नो सर. अरे तुझे दुख नहीं है, सिर्फ अच्छा दिल चाहिए. अरे देन I think sir, that is what a lot of people are doing also these days. क्या करेंगे? नहीं सर. अरे ऑनेस्ट रहूंगी. अरे वही बोल रहा हूँ. अभी क्या अच्छा दिल छोड़ दे के मैं ऑनेस्ट कर दूंगा. एक बार मैंने वचन दे दिया तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनी. अच्छा सर मुझे एक सवाल करनी है कि आपने डेंजरस कतरा में 2 गर्ल्स को रखा है, तो मेरा ये आपसे भी पहले भी सवाल था, अभी भी सवाल है कि बहुत सारे ऐसे मूवी में अगर लेस्बियन होता है तो एक को टॉम बॉय जैसे आई मीन हेयर कट, थोड़ा सा शर्ट वैसे पहनाता है, और एक को गर्ल, पर आपने 2 कैरेक्टर जो है उसको गर्ल्स के जैसा ही दिखाया. इसके पीछे कारण क्या है? मतलब जब आप लेस्बियन करो तो एक को तो टॉम बॉय कटिंग वैसे करना चाहिए था. ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है. मैं इसलिए वो डिसीजन लिया कि अगर मैं फिजिकल लुक का भी अगर मैं एक सहारा लिया, अच्छा नैना को टॉम बॉय हेयर है, वो सब ऐसी कपड़ा पहनते, जस्ट बूट्स पहनते हैं, ये सब जो भी लड़के लोग उसका जो टिपिकल होता है, अगर वो मैं किया तो इट इज लुक के सहारे से एक होता है. आई एम नॉट सेइंग इट वर्क्स और नॉट, लेकिन
तू भी बिल्कुल लड़की जैसे दिखते फिजिकल लुक में, लेकिन तेरा जो बॉडी लैंग्वेज तूने यूज किया, तेरा जो बॉडी लैंग्वेज का एक खेल है, आई थिंक दैट मेक्स इट इवन मोर स्ट्रॉन्गर. इसलिए अगर तुम्हारा लुक अप्सरा से बहुत ही डिफरेंट है, लाइक शॉर्ट हेयर, ये वो, आई थिंक इट यू ऑलमोस्ट लुक लाइक अ बॉय बिकॉज ऑफ दैट. बट लुकिंग लड़के जैसे दिखते हुए तू एक मर्द का बॉडी लैंग्वेज लिया, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट एक्सेंचुएट्स एंड इज मोर इफेक्टिव. ये मेरा पॉइंट है. एंड आई थिंक लोगों को ये बॉडी लैंग्वेज, हम दोनों के बॉडी लैंग्वेज से वो चीज समझ आ रहा है. लुक्स करके तो आई थिंक वो देख के समझ आता है, बट अभी क्या है, जब ट्रेलर लोग देख रहे हैं तो हम दोनों के जो कॉन्वर्सेशन है, हम दोनों का जो केमिस्ट्री है, उस देख के लोगों को समझ आ रहा है yes she is the one who is little bit like a, I think that makes it more you know relatable and more acceptable ki ha they're understanding it by her acting and absolutely her body language. अभी एक ये फिल्म जो रिलीज कर रहा है, एक दीपिंदर नाम का एक डिस्ट्रीब्यूटर है, उसने एक दो रील दिखाए फिल्म में. जब मैं मिक्सिंग कर रहा, उसका पहला रिएक्शन था कि सर ये पिक्चर का सक्सेस इन दोनों का केमिस्ट्री है. इसमें लिप लॉक ने, ये ने, उसकी खूबसूरती ने, ये दोनों कैरेक्टर्स का जिस तरह से नैना और अप्सरा की इसकी केमिस्ट्री इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है. दिस व्हाट ही सेड, बिकॉज रिलेशनशिप का एक्सटेंशन में वी विल फॉरगेट अबाउट अदर थिंग्स, यू नो. Now that chemistry comes from difference in body language, difference in characterization, difference in the looks. Looks are very subjective to individuals. One of the most favorite shots in the film jo hai, when you're crying, when she puts you on the bed, or when you're trying to tell what's happening, and Naina keeps her hand on your mouth. Okay, yes, ye sab chodo. And then after she puts that and then she kisses you, उसमें मेरे को ऐसा लगा कि अरे ये सब चीजें, let's fuck it, okay, we will deal with them. Now just let's go. Yeah, okay, yeah. We will deal with different time, you know. So Naina is smaller in size. She looks so much bigger than you only because of the attitude. Naina ka jo attitude says she I mean taller than you and stronger than you and heavier than you. Iski jo body language is tarah se she keeps her hand on your mouth and shh, you know, and you, when you look at her, you feel a flow of strength from her. Yes, I have this girl with me. और ये मेरी जिंदगी में take care of me. That is the point. So that is what he talked about, the chemistry. Yes, the chemistry. दो लोग के बीच में जो इमोशंस है, फीलिंग्स है, वो जो थॉट प्रोसेस है, उनकी जो बैकग्राउंड्स है, कहाँ से उनकी जो अलग अलग एक्सपीरियंसेस है, ये सबको मिलके इसका केमिस्ट्री बनता है. केमिस्ट्री इज अबाउट दैट, यू नो. और एक सवाल, यस, जब आप कास्ट कर रहे थे अप्सरा और मुझे, तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगा कि आई मीन आपने इसके पहले भी आंसर दिए थे, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ कि जैसे आपने सोचा कि अप्सरा हाइट लंबे है तो नैना थोड़ा शॉर्ट है, तो उसमें उसको एक्टिंग करने में या कुछ सपोर्ट में कोई प्रॉब्लम होगा? हमारा डिस्कशन एक बार हुआ था सर का और हाइट, मतलब हाँ, इसके लिए आपको तो वो चीज माइंड नहीं लगा था? इसका आंसर मैं देता हूँ. यस, यही पॉइंट एक पॉइंट ऑफ टाइम में किसी और ने मेरे को बोला कि हाइट डिफरेंस, अगर नैना मेल का रोल कर रहा है, डोमिनेंट रोल, एंड नैना इज स्मॉलर देन इन हाइट देन अप्सरा, तो मैंने उसका जवाब दिया कि अमिताभ बच्चन इज द टॉलेस्ट एक्टर, जय बहादुरी इज वन ऑफ द शॉर्टेस्ट एक्ट्रेसेस. लेकिन वो कॉन्सेप्ट यहाँ इसलिए होगा कि ये रिवर्स बन रहा है. मेल
मेल फीमेल का फीमेल फीमेल ऐसा एक कॉन्टेक्स्ट में आया तो सडनली मेल जय बहादुरी कैरेक्टर, फीमेल अमिताभ बच्चन कैरेक्टर, यू नो सो लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ पर्सनालिटी और हाइट से कुछ लेना देना नहीं। मैं एक तो अलग अलग एग्जांपल देता हूँ। ऑल द पीपल इन आई एम टॉकिंग अबाउट इन the greatest most powerful people जैसे हिटलर है, स्टालिन है, they are the shortest people है। Very short, yes. Bodyguards will be very tall क्योंकि जो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो 6 फुट 6-7 फुट होते हैं। और जो इसलिए कि एक थियरी ऐसा भी है कि जो शॉर्ट पीपल विल वर्क मोर बिकॉज दे वांट टू ग्रो टॉलर। टॉल पर्सन सोचते मैं अभी टॉल हूँ, अभी मेरे को वर्क करने लगे। That's not case of Apsara. I'm not saying that. No, Apsara basically बात बोल रहा हूँ। अप्सरा की जो तेरे ऊपर रिस्पेक्ट है पहले से, तू अप्सरा एंड मदर वर आफ्टर मी। अब नैना को कन्विंस करो प्लीज, नैना को कन्विंस करो। नैना के ये फिल्म हो ही नहीं सकती, नैना के बिना ये फिल्म हो ही नहीं सकती। वो दोनों बोल रहे थे मेरे को सर वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। आपके यहाँ से अप्सरा के यहाँ से आंटी के यहाँ से भागने का जगह ही नहीं था। टू टेल द फाइनल आंसर, ये फिल्म में अमिताभ बच्चन शॉर्ट बन गया, जय बहादुरी टॉल बन गया, डेंजरस। मुझे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि अगर मुझे ऐसा फील हुआ कि काश मैं अप्सरा से थोड़ी लंबी होती तो मेरे लिए एक बॉयज का एटीट्यूड करने में और ज्यादा इजी होता। मुझे भी लेकिन मुझे ये करेक्ट लेकिन मैं अलग सोच रहा हूँ, इसलिए कि जो रियलिटी में कपल्स बहुत ऑड होते हैं। सिर्फ हमको एक कमर्शियल मेन स्ट्रीम सिनेमा में हमको मैच करने को ट्राई करते हैं, एक मॉडल्स में मैच करने को ट्राई करते हैं। रियल लाइफ में ऑलवेज कपल्स आर ऑड। तो मुझे जब एक मेरा जो फेवरेट शॉट है, जब तू बीच में ऐसी बैठ के अप्सरा को वो जो छोटा एक बॉडी स्विंग करती रहती है, वो वन ऑफ मोस्ट फेवरेट शॉट्स, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विजुअल्स। वो विजुअल मुझे पर्सनली फॉर मी लुक्स मोर मॉन्यूमेंटल देन ताजमहल एंड ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एंड विक्टोरिया वाटरफॉल्स। ये सब मेरे को कोई एक पेंटिंग दिया और सिर्फ फोटो दिया, फोटो लगाऊंगा मैं मेरा ऑफिस में। तो उधर क्या हो रहा है कि तेरा सिटिंग का जो पोजीशन, बॉडी लैंग्वेज है, यू लुक मोर पावरफुल देन अप्सरा। इसलिए कि तू उसकी ब्यूटी को तो देख रही है और उसकी एक क्या बोलते हैं, आई मीन यू लुक लाइक इन कंट्रोल ऑफ हर एंड शी इज ट्राइंग टू प्लीज यू विथ हर ब्यूटी, विच इज वो पॉइंट है मेल और फीमेल का जो ये है। मैं एक एग्जांपल दूंगा, रंगीला में जब उर्मिला तना तना में भाग रही है तो अपना जैकी श्रॉफ ऐसा दिखता है, आंखों में जो वर्शिप है उसकी वजह से उर्मिला का ब्यूटी उठती है। उर्मिला इज ब्यूटीफुल, लेकिन अगर मैं ऐसा वे ऑफ एक क्लोजअप निकाल के मैं गुलशन ग्रोवर को लगाया तो शी लुक यू नो व्हाट अबाउट रेस्पेक्ट। एंड आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग गुलशन ग्रोवर, आई एम सेइंग बिकॉज़ गुलशन ग्रोवर का एक रेपुटेशन है रेपिस्ट, ऐसा दैट इज द रीजन एंड कॉन्टेक्स्ट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गुलशन ग्रोवर एज एन एक्टर, एज अ पर्सन, यू नो। तो सो मेरा पॉइंट है व्हाट आई डिड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस, अगर अप्सरा इज डूइंग लाइक उर्मिला और नैना इज सिटिंग ऑन द बीच, ऐसा बैठ के सीख रही है। रियल लाइफ में आई डोंट नो इफ अगर सी फर्स्ट ऑफ ऑल लेस्बियन को जनरलाइज करना करेक्ट नहीं। ऑल कैरेक्टर्स, ऑल गर्ल्स डोंट बिहेव सेम, ऑल मेन डोंट फील बिहेव द सेम। जनरलाइजेशन का तो पॉइंट ही नहीं। लेकिन जब नैना बीच पे बैठ के तेरे को देखती है, सो उसको तो मेस्मराइज है, उसका जो इंटेंसिटी है
और जैसे आप दोनों जानते हैं कि स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में उसी के तो क्लाइमैक्स का वो लीड आ गया जो भी हुआ है क्लाइमैक्स में, यू नो. या सो कमिंग बैक टू दिस, if now after the picture I mean trailers आ गया, फिल्म रिलीज हो गई और सब होने के बाद अगर एक नेक्स्ट टाइम नैना कोई लड़की कोई औरत whatever आके I love you and if she says something, what will you say? सर उनके फीलिंग्स को रेस्पेक्ट देते हुए आई लव यू टू बोल दूंगी. I love it. I love it. You know what she said? I don't know what she meant, but the point is, मुझे किसी ने बताया कि स्पेन ऐसे में ऐसे बोल रहे थे कि अगर एक लड़का एक लड़की अप्रोच करते तो आई वांट टू किस, सॉरी आई हैव अ बॉयफ्रेंड, इसलिए कि वो मान लेते कि ऐसा फीलिंग्स एक लड़के में आना है खूबसूरत लड़की को देखने के बाद नेचुरल है, तो वो कोई तरह को ऊपर कूदना नहीं, उसका मन में जो फीलिंग है वो बता दिया. और वही एक क्या बोलते पोलाइटली यू कैन रिफ्यूज. लेकिन हमारे देश में क्या होता है, वो ये मी टू का कैंपेन में आपने जो देखिए, अगर मेरा ऊपर कमेंट मारा, मैं ट्रॉमा में गया, अब मैं अभी तक सह रहा हूँ, अभी तक मैं उसके अंदर से 20 साल के बाद मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, दे से दैट इन मी टू. लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, अगर मैं एक एक्ट्रेस हूँ, अगर मैं कोई किसी ऑफिस में गया, या व्हाट इज योर थिंग, अगर वो कोई अटेम्प्ट भी नहीं किया मेरे ऊपर, एक टू मेक ए पास में कमेंट है ये है, और दूसरा ऑफिस को गया, वहां भी चलो सिर्फ काम की बात है बस, तो मैं सोचने लगता हूँ कि अरे मैं इतना अगली हूँ कि कोई भी अटेम्प्ट भी नहीं कर रहा है और मेरे को ट्रॉमा उस वजह जाएगा. No, I mean politically incorrect. मेरा कहने का मतलब ये है कि it is natural that a man will try to get a woman will try to get. So वो समझ के no, see eventually the ना बोलने का जो पावर है वो वुमन में है, लेकिन जो व्यक्ति प्रपोज किया उसको समझने का, ट्रॉमा में गिरने का कोई जरूरत नहीं. ये मेरा माइंड, अगर वो फिजिकली वो अलग बात है, फिजिकली एंड दैट इज डिफरेंट, बट द फैक्ट ही डिजायर्ड यू को, तो आपको प्रॉब्लम है, तो दैट इज ए प्रॉब्लम, दैट इज माय होल थिंग, यू नो. सो my bottom line is I want to tell you what I feel about the finality of Dangerous in the context. I'm not talking about the film. Lesbians ka far points and against points I want to try and somehow, you know, in the context of a viewer, I'm saying, you know, in the perspective. बिगेस्ट पॉजिटिव पॉइंट ये है कि I get a great pleasure in seeing two beautiful women जिनसे मैं आंख नहीं हटा सकता हूँ, वो दोनों का बीच में, और उन दोनों के बीच में जो प्यार है, and प्यार will look the best in the woman's face, it will never look in the man's face. आप जो भी लव स्टोरी देखो, जो भी लव स्टोरी में वुमेन का फेस में जो प्यार है, मैन में कभी नहीं दिखेगा. So I enjoy the love and the beauty and the sensuality and everything, and that is one point. Okay. Second point ये है कि फिल्म इंडस्ट्री में इतने सारे फिल्म्स बने, thousands of films man woman के स्टोरी के ऊपर. Okay. When you say love is love, no battle between whom, प्यार प्यार होता है,
कौन क्यों, लड़की लड़की से क्या, लड़का लड़का से क्या, लड़का लड़की से क्या, उससे कुछ नहीं. फीलिंग इज, लव इज डिफरेंट. लव इज अबाउट टू पर्सन्स, इज नॉट द जेंडर. उसके हिसाब से एक you can make more films in a genre where, like I said in Dangerous, सिर्फ ये दो लड़के जो प्यार में है, उसके एक क्राइम, उसके एक बैकग्राउंड में क्राइम ड्रामा चल रहा है, बस वो पॉइंट. दिस इज ओवरऑल सोशली एक बहुत ही बड़ी एक आई मीन व्हाट यू कॉल नेगेटिव पॉइंट इस पॉइंट से ये हो रहा है कि इतने सारे फैंस जो अप्सरा को है, नैना को है, वो लोग ख्वाब देखते रहेंगे मेरे को अप्सरा मिलेगी, नैना मिलेगी, ये मिलेगी, लेकिन वो दोनों को एक दूसरे मिल गए और उनका ख्वाब तुम सब लोग के पानी में गिरा दिया. तो उन लोग सबकी तरफ से और मेरी तरफ से भी मैं एक भगवान को विनती करूंगा कि आप दोनों में एक ब्रेक हो जाए, ब्रेकअप कभी भी, इसलिए कि एवरीबडी थिंक्स ऑफ ब्रेकिंग अप. अगर एक बहुत खूबसूरत हीरोइन एक लड़की के साथ अफेयर है और किसी और के साथ, हीरोइन ही नहीं, कोई भी रियल लाइफ में, हम सब मर्द लोग वेट करते ब्रेकअप कब हो जाएगा. नो या ब्रेकअप हो गया, मैं हूँ लाइन में, मैं भी हूँ लाइन में, ऐसा. I am very happy that you both are so much in love, but I'm wishing for you to break up for the sake of both me and your all fans. ये मेरा, मैं भगवान में नहीं सर, मांग. ये तो फैंस कमेंट्स में बताएगा कि उनको हमारे जोड़ी अच्छा लग रहा है या उनको ब्रेकअप चाहिए. ये तो जितने सारे फैंस है वो बताएंगे कि नहीं हम दोनों को देखना चाहते हैं या नहीं सच में ब्रेकअप करो. Yes, you're right. Yes, Naina, you're right. वो perfect है. मैं सिर्फ जस्ट गुड ह्यूमर में. आज ट्वीट भी किया है कुछ लोगों का रिएक्शन. मेरा पॉइंट है अप्सरा कि तुम दोनों इतना खूबसूरत है, मुझे I want you to become the wealth of many, not only for two people, which is you and Naina. अच्छा सर, मुझे और एक सवाल. तो भी हमारे लिए कभी कभी एक झगड़ा करके अभी मेरे को होप दे दो, जब ऐसा हो जाएगा, ऐसा. सर एक सवाल करते हैं. Sorry to disappoint you, that will not happen. No. Everybody breaks up. Arey, what do you mean it can't happen? Arey, all relationships, they're in the height of that. It won't break up. पब्लिक बोल रहा है कि कब रिलीज है, इसका मतलब हमारे जो रोमांस है वो उनको पसंद कर रहे हैं. एवरीबडी सर, यू विल नॉट बिलीव, अभी तो हमने डेट डिक्लेयर करी, अब तो लोग वेट कर रहे हैं मूवी आने का, बट उससे पहले तो सब बोल रहे थे रिलीज कब हो रही है, मूवी कब आ रही है. अभी सुपर हिट पेयर्स जो भी थे, आई डोंट टेक नेम्स, वो लोग का भी ब्रेकअप हो गया ना. तो सर एक सवाल करनी है, जब आपने डेंजरस सोचा कि ऐसा सब्जेक्ट में काम करना है, तो आपने ये कभी सोचा है कि ऑडियंस इसको एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, या ऐसे टाइप के प्रोजेक्ट को सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा? ये कभी आपने कभी सोचा है कि एज अ पब्लिक के, आई मीन पब्लिक का थिंकिंग कि पब्लिक ऐसा सब्जेक्ट पसंद करेगा नहीं? मुझे लगता है कि 100% मैं जानता हूँ. इट्स नॉट लाइक सोचने की भी जरूरत नहीं, इसके लिए आई स्टडी लॉट ऑफ पीपल्स माइंड्स. 2 पॉइंट्स. एक डेंजरस एक स्टोरी के हिसाब से थीमेटिक में एक दो लोग जो लेस्बियंस है, इस टाइप के लोग, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ. एक एक्ट्रेस मुझसे मिलने आई थी एक 2-3 महीने पहले. मैंने रीडिंग रूम में था, मैंने उसको डेंजरस का एक गाना बताया. गाना हाफ में उठ के चली गई. It is not about the Gana. It is about she didn't want to be seen. अरे ऐसा दो लड़कियों के बीच में रोमांटिक डुएट, वो थॉट उसको she felt. मतलब उसका आई मीन रिएक्शन क्या था? No, वो
हाँ नहीं, लेकिन वो उठ जाने के बाद रात में मेरे को मैसेज किया, इसलिए कि आपकी जो असिस्टेंट्स भी थे एडिटिंग रूम में, वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं बैठ के ऐसा गाना देख रहा हूँ, लेकिन गाना से। तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्या है कि उनको डर है कौन क्या सोचेगा। मन में एक अलग सोच है, उनका डर है कौन क्या सोचेगा, पूरी जिंदगी इसमें वेस्ट करते वो लोग। सर ऐसे टाइप के तो भी लोग वो ओके। अब डेंजरस का फिल्म को एक बाजू में रखे, मैं बस एक पॉइंट बोलना चाहता हूँ। अगर जो रोमांटिक सॉन्ग है वो डेंजरस की सॉन्ग है, जो तुम्हारी सीन से सिर्फ वो लोग को पसंद आएगा जो लोग वो शायद 20 साल से सेक्स नहीं करे होंगे। सेक्स का और इसका कोई ताल्लुक नहीं, वो मेरा पॉइंट है, लेकिन उससे उनका माइंड स्टेट पता चलेगा। सर मैं एक चीज सवाल करना चाहती हूँ, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट होता है मेरे को आंसर कंप्लीट करना है। लोगों को जो भी लोग दिल से मन से एक फन फील होना चाहते, एक एंजॉयमेंट फील होना चाहते, दूसरों की फीलिंग्स को रेस्पेक्ट करना चाहते, दूसरों के फीलिंग्स के ऊपर जजमेंट नहीं करना चाहते, वो लोग अलग है। यस, वो लोग बहुत कम है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो अपनी अपनी स्टेट ऑफ आई मीन अपनी जो लिविंग रूम में बैठ के देखने का एक अलग है, बेडरूम में अलग है, बाथरूम में अलग है, किचन में अलग है। किचन में इसलिए बोल रहा हूँ कि हाउसवाइफ जो है वो किचन में जब ब्रेकफास्ट या लंच बनाती है, उसका अपनी एक प्राइवेसी होती है। यू नो, लिविंग रूम इज द डेंजर एरिया, इसलिए कि सब लोग लिविंग रूम में सोचते हैं मेरा बेटा क्या सोचेगा, मेरा बेटी क्या सोचेगी, मेरा ये क्या, ये सब लिविंग रूम में होता है। सो फैमिली होता है लिविंग रूम में, बेडरूम में सब अलग अलग होते हैं, और बाथरूम में अलग होते हैं, किचन में भी अलग होते हैं। रियलिटीज किचन, बाथरूम और बेडरूम में, लिविंग रूम में ड्रामा होता है। सर एक सवाल करनी है कि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होता है कि ऑडियंस सोचता है कि कैसे मैं थिएटर में जाऊं, उनको देखने का बहुत मन है कि मैं इस प्रोजेक्ट को देखूं, बट थिएटर में जाऊंगी तो टिकट लूंगी तो पब्लिक क्या बोलेगा या ऑडियंस। बट ये अगर ओटीटी पे रिलीज होता है तो ये मिलियन हो जाता है, तो आई मीन वो छुपके से देखे या कुछ भी, नहीं फिर तो अभी भी पब्लिक के मन में थोड़ा डर क्यों है? ये बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है। जब मैं कॉलेज में था, कॉलेज में एक ये होता था कि हमने एक पोस्टर देखा, उसका श्रीदेवी वाज अ बिगेस्ट स्टार एट दैट टाइम। कोई मलयालम फिल्म में श्रीदेवी है, उसमें पोस्टर में डाला श्रीदेवी का एक उसका साड़ी थोड़ा ऊपर उठ के हाफ तय दिख रहा था। वो पोस्टर के वजह से हम सब लोग चले गए जो कॉलेज स्टूडेंट, जाके देखने। वंस द पिक्चर स्टार्टेड, वो बहुत ही सीरियस इमोशनल फिल्म है, लेकिन हम लोग क्या वो शॉट के लिए आए, हम लोग अरे यार हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है, अरे फाइनली वो सीन जो है वो है। तो हम लोग इसलिए पहचाना कि वो साड़ी एक ही है, वो साड़ी है, विलन आ गया। अभी विलन हीरोइन को क्या कर रहे हैं, घंटा मेरे को शॉट देखना है, हम लोग सब वेट कर रहे हैं उस सीन के लिए। अभी उसने क्या कुछ रेप का अटेम्प्ट है ऐसा खींचा, वो 1/4 सेकंड का शॉट था फिल्म में, 1/4 सेकंड भी नहीं, ओके। लेकिन वो जो ही वो बास्टर्ड जो स्टिल फोटोग्राफर सेट पे था, वो गलती से वो शॉट खींच लिया, वो पोस्टर बन गया। Yeah, you know, that is the point. But I'm sure you guys. No, मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो फिल्म है सिर्फ एक थिएटर में, एक कॉर्नर में कोई सिविल एक थिएटर में रिलीज होती थी, जहाँ स्टूडेंट्स है, हमारे पास माँ बाप ऐसा कुछ लोग, फैमिली का झंझट नहीं है, तो हम छुप के हम जाते थे।
लेकिन यही फिल्म अगर मैं फादर मदर के साथ, तो मैं लाइन में नहीं खड़ा सर, मेरा फादर भी चुप चुप के जाएगा वो थिएटर को। सब लोग एक एक करके जाने वाले फिल्म अलग होते हैं, फैमिली के साथ जाने वाले फिल्म अलग होते हैं। लेकिन फैमिली में सब लोग भी ये देखते, ये पॉइंट एक एक देखते, लेकिन अलग अलग वो पॉइंट। दूसरा 100% जेन्युइनली कुछ लोग फील होते हैं कि लाइक जैसे मैं, आई डोंट कनेक्ट टू गेस, आई कनेक्ट टू लेस्बियंस। सिमिलरली समबडी कनेक्ट्स टू गेस। ये तो अपना अपनी इंडिविजुअल आई मीन एग्जाम्पल्स वो कॉन्टेक्स्ट में नो। तो मैं सोचता हूँ कि फिल्म का जो सक्सेस है, एक थिएटर है, बॉक्स ऑफिस है, कितने में बनी है, कितने आएगा, बट एवेंचुअली इट रीच एवरीवेयर। वो ओटीटी है, थिएटर है, ये है, उससे कुछ लेना देना नहीं। It reach everywhere. People will get their own opinions and this and that. This is I'm seeing for the last whatever years, you know. So वो point. And now the context is कुछ लोग का ये है कि अरे ऐसे फिल्म में लिप लॉक क्यों है? ये रामू का पब्लिसिटी स्टंट है, वो गिमिक कर रहा है, ये कर रहा है, या तो नैना बिकनी में ऐसा बैठ रही है, अप्सरा वो कर रही है, यू नो। मेरा जवाब देने से पहले अप्सरा, जो भी लोग तुम्हें बोलते हैं कि तुम ऐसे एक्सपोज क्यों कर रहे, तो व्हाट इज योर पॉइंट? So my point is, I think it looks good. I look good in a bikini, and I'm confident to wear it, and I want to ask you, in the context of what you were saying in some interview I saw days back, when men are flaunting. Oh yes. I want to ask that context. Yeah. So I honestly think कि लड़कियों के, अभी for example let's talk about somebody who's talking about thighs in that interview, I remember. तो मुझे ऐसा लगता है अगर किसी लड़के के abs या लड़के के biceps या लड़के को shirtless देखते हैं तो लोग उसको उसके कैरेक्टर पे नहीं बोलते, पर एक लड़की को अगर बिकनी में देख लेते हैं तो सीधा उसके कैरेक्टर पे आते हैं, because I think the most easiest thing for anybody to say no. Apsara, you said something very interesting in that thing, Rani. You said when guys like Tiger Shroff, Hrithik Roshan, and whoever has a body is flaunting, where men are not supposed to flaunt historically, you are not having a problem with them. Yes, we would anyways. As a girl, I would go and watch a movie where the hero has an amazing body. I would appreciate it. So I think women are very open-minded. I think in which way? It should be the same about girls. There is thousands of years, women are actually shown aesthetically. Statues are made of women, not of men. Yes. You know. So, why I ask this question is in the context of it will fall in the same pattern, or what I said. You know. Sir, I honestly think the difference is because women are more exciting than men. That's why when a woman wears a short dress, her body is definitely more exciting than a man's body. So that's more of a topic of discussion. I tell you one of my personal experiences when I was doing Rangila. Urmila comes from a very conservative middle class family. And she obviously did most of her films before Rangila completely rusted. When I told about Rangila, when I wanted to see this kind of costume, and Urmila obviously she was feeling very this thing. And I said, I was watching a film with my mother called Singing in the Rain. It's a Hollywood musical, classic, Just before that, some David Dhawan film we were watching with Karishma Kapoor, and my mother I saw it. And next time playing Singing in the Rain, she is enjoying it. All these girls in bikinis and swimsuits.
तो मैंने ये समझ लिया जब हीरोइन कन्विक्शन पे कर दिया, the Sarkailo Khatiala kind of a song, Karishma Kapoor also doesn't like doing it. She thinks this is what the audience want and she hates it. That shows in the face. उसी के साथ जो lyrics का जो meaning है, जिस तरह की music है, वो सब मिलके एक it creates a feeling which the masses like. The picture is a super hit. The song is a super hit. Nobody's saying no to that. Yes. But my mother has a problem with that because Karishma Kapoor doesn't seem to be enjoying it. You know that's a takeaway. ऐसा लग रहा है कि ये सब commercial elements मिलके उसको एक I mean they're forcing her to do that. That is her feeling. I'm not saying my feeling. Not the reason whether Karishma Kapoor did for that or not, I don't know. I told Urmila, you have a beautiful body, okay? And does both time पे मैं ये एक बात सुनता हूँ कि story demand किया तो मैं पहनूंगा. Story never demands. Story के अपनी हाथ में, लेकिन film में एक visual element है. मैं एक अब example देता हूँ दोनों को. तन्हा तन्हा song है. तन्हा तन्हा मेरी बात है. उसमें वही गाना. I'm asking you honestly. It's a love story. It's an emotional love story. If that whole song is shot with Urmila in a sari, do you think it'll have the same effect? आप छाती के ऊपर डाल के बताओ मुझे अभी अगर if that shot of her running is not there in a t-shirt, will it have the same effect? No, absolutely. Because I think she looks so carefree. She looks so carefree and enjoying it in the moment. Is exactly the point. I am saying, Urmila told her, you take a pride in your beauty, audience will react your pride. You do it guiltily, they will react your guilt. You feel almost, that is what my mom felt about Sarkaila Khatia song. You know. Then that scene when she was jumping in the water, in the swimsuit, yes. And in the theater, people are gasping with that. Because see, I'll tell you, if you look at it like a puppy dog or something, if you look like Harry for your dog, for example, it's so it doesn't care about who's looking at him and what this and that. Yeah. So the free spirit is what people connect to. Yes, being carefree. Free spirit. Anytime, anytime when you are, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसा किया तो कौन क्या बोलेगा, कौन कैसा देखेगा, उसके बाद मेरे को क्या सहना पड़ेगा, ये सब छोड़ के conviction के साथ, they react to the conviction. Yes, yes. Now, Naina in the film, when she sucks your toe in the makeout scene, that is what the point. Even tell Naina. You know, the only last time I saw that, Naina, before she sucked your toe, only once I saw in my entire career, Jackie Shroff sucks Urmila's foot in Rangila, in the boat. He did it just that, you know, Tana Tana song me. So this is about ultimate intimacy of what one person can do to another person. Man, woman है, woman उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. Yes, absolutely. So I think we've been talking for 1 hour 20 minutes or something. Now, I was talking another. डेंजरस फिल्म में बहुत सारे रोमांटिक सीन हैं, बहुत सारे किस सीन हैं और बहुत सारे सीन हैं जो आपने अभी तक ऑडियंस को नहीं दिखाया. बेड सीन है. So, जब हम लोग सीन कर रहे थे, जब आप कैमरा आपको देखने में कितना मजा आया? नहीं कैमरा में जब आप कैप्चर कर रहे थे तो आपको कहीं लगा कि दो लड़की जैसे किस कर रहे हैं या हीरो हीरोइन जब किस करते हैं तो दो में फर्क क्या होता है? ये आपने very good question. I love it. Yeah. I mean, yeah, very good question. Yeah, I agree with that. So, बहुत experiences है. मेरा point is, see, if I look at two women kissing, whether it's in a video or whatever, वो अलग बात है. दूसरा point है कि
As a director, what I felt is different, because as a director, when I'm on the set, there'll be 100 other things going on. Abhi kya ho raha hai, lighting kya hai, ye kya hai, wo kya hai. But bottom line is, hard meets soft is a man-woman. Soft meets soft is a woman and woman kissing. That is the मेरा जो समझ है वो. नैना का लिप सॉफ्ट है, अप्सरा का लिप सॉफ्ट है. सो नैना का बॉयफ्रेंड वो हार्ड है, मैन का तो हार्ड होगा, वो पॉइंट है. बट I never enjoyed seeing a makeout scene. Not even seeing, even me doing a makeout in my real life ever, more than seeing you two guys in Dangerous. I love your answer. Yes. मैं ये जानती हूँ कि जब फिल्म रिलीज होगा, I mean ऑडियंस जब हमारे बहुत सारे मेकआउट सीन, I mean बेड सीन देखेगा, तो आपको क्या लगता है हमारे ऑडियंस को, I mean क्या फील लगेगा? क्योंकि ऑफ कोर्स मतलब जब फिल्म रिलीज होगा तब पूरा सीन उनको देखने मिलेगा, क्योंकि उतना सीन आप डाल नहीं सकते ट्रेलर में. बट जब आपको रिलीज होगा, हाँ, बिकॉज़ सर ऐसे तो पहले कभी देखा नहीं है. एक थिएटर में जाके इतने बड़े स्क्रीन में ऐसे किसी ने देखा नहीं. क्योंकि ऑनेस्टली जब हम लोगों ने भी बड़े स्क्रीन में उस दिन देखा, तो हम लोगों ने भी देखा कि हम लोग हैं, मतलब वी वर आल्सो लाइक टू गर्ल्स, लाइक वी वर, आई वुड नॉट से शॉक्ड, वी वर mesmerized, and I was like, what? ये हम दोनों हैं. So I don't know how audience is gonna react. सर और एक सवाल है, और एक चीज है कि इसके पहले भी लेस्बियन फिल्म आ चुका है, तो उसमें बहुत कम I mean दिखाता है. आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने जो किया है, मुझे नहीं पता कि इसके पहले शायद लेस्बियन फिल्म आया होगा, बट हम लोगों ने I mean जो बेड्स we have celebrated the love, like we've shown the love and the chemistry and the romance between them. And I think we are very proud to show that. So what do you think audience is gonna, how are they gonna react? I'll tell you, my view of the audience is just one simple thing. जिसका भी वो मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, या LGBTQ का जो भी कम्युनिटी लोग हैं, लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर, क्वेयर, व्हाटएवर, वो सब, उनके अंदर अगर प्रॉपरली फंक्शनिंग बॉडी पार्ट्स होते, वो सब लोग अगर फंक्शनिंग बॉडी पार्ट्स में कुछ गड़बड़ है, तो वो आई एम नॉट ए डॉक्टर, आई एम नॉट ए साइकियाट्रिस्ट, आई एम नॉट व्हाटएवर, ये मेरा दिस इज द पॉइंट. See, functioning body parts is a very different thing, which includes the mind also. I think you are dirty. You are thinking something else. I didn't mean that. No, obviously. I'm not thinking dirty. I know you well. I was talking about the nose and the ear and the brain. I don't know what. I know exactly what you're talking about. Ajay sir, all your fans want to know what are you drinking. Me? All your fans Kota. Yeah. Show the glass now once, sir. Yes. Fans want to see. Yes. No, but I don't know. But I want to tell you something. Okay? This is one thing. See, eventually, okay, body is a body. Body is same whether it is lesbian or gay or transgender, whatever it is. Yes, I want to just illustrate one experience I've had in my life. Okay? When I was in very early days of my career, I was before I became a director, I was mad about, obviously everyone knows about Sridevi. Okay. In my yes. Before I became a director, I'm talking about as a teenager in college and X and Y and Z. And when I got married, I always used to talk about Sridevi, and my wife used to tease me. You know, her name is Ratna.
Because I used to call her angel. I used to say that she doesn't belong on this earth. She's just come from heaven for our sake, just as a blessing. I used to talk like that about her. So your angel, yeah, your angel's film is coming. Your angel's film I heard is flopped. She used to talk like that, you know. Then became a director. After my first film, Shiva, became a big hit. And then when I got this Shankar, Sridevi was the biggest star at that time. Okay. And suddenly, the pictures of me and Sridevi in some magazine. Sridevi is saying something about me. I'm so excited to work with Ram Gopal Verma. So suddenly, she became a reality in the context. Because any woman, I'm talking about that time, in the context of that. Yes, yes. Your husband loves Britney Spears is okay. Because you know, this fucking truth will never get Britney Spears. अरे उसको अपने एक fantasy में लेना था. But neighbor's wife is a problem. I love my neighbor's wife. That's a problem because she's accessible. She's right next door. Do you understand? Naina ji. हाँ sir. मेरे पड़ोस का बीवी मुझे बहुत पसंद है is a problem. मेरे को जिंदगी में कभी नहीं मिलने वाला ब्रिटनी स्पीयर no problem. Because वो जानती है जिंदगी में मिलेगा ही नहीं ये चूतिया को. That's the point, okay? So now in the context of that, the moment suddenly Sridevi is becoming a reality. Okay? And I can't get over this one experience. One day I came late in the night, and us waqt, there was no cell phones. So yeah. When she opened the door, and I went in, and your angel called, she said. Yeah. So she said, why did she call so late? Yeah. I don't know. Now, I didn't want to call because already it was 11:30 and then in sleeping, she said, कुछ हो रहा है क्या? No, see, कुछ हो रहा है क्या? So I realized first time she's thinking I am doing something with Sridevi. I want to get up and dance. अरे दुनिया में कोई तो ये सोच रहा है कि मेरा believe कर सकते हैं. I want to go and dance. You know. And did you actually dance? Yeah, I want to dance. Okay, so वो एक point. And I said, this is the most important. Why I said this incident is because of this. I told her, see, life, I mean, ये aspect में दो होते हैं. एक सोच होती है, एक physicality होती है. Physicality क्या touch है. अगर एक छोटा बच्चा, if he touches the breast of a woman, she will not even think in it. अगर एक man touch किया, तो obviously she will have a huge problem or huge enemy. The constitution of the finger of the kid and the man is the same in terms of flesh, blood and bones. So what you're reacting is to the thought behind the touch. It is not the touch. The mind. Yeah. Touch तो physical है. The mind behind. ये touch behind एक child है, innocent है, उसको कुछ जानता नहीं. इसका पीछे एक मर्द है, इसका पीछे वो है, ये सोच के. तो मैंने बोला कि अगर you can hold me back physically to not go if I'm having an affair with somebody, but what if I am with you and I'm imagining you to be that? Because that is everything is in the mind, you know. So जो एक LGBTQ जो community है, whether it is a female private part, a male private part, all of them exactly are the same constituents of what is physical aspect of it. It is the thought which makes the difference. Yes,
Like you think that there is a tiger, there is a fox, there is a snake. All of them are life forms. They all have just different. What makes the difference is the feeling. So, अगर tiger सोचा रे ये बंदर क्यों है? It is stupid because forest has all kinds of animals. Yes. So human beings, just because we all look similar, that doesn't mean we cannot have different feelings. We cannot have different drives. सिर्फ एक रिलीजन में या सोशल टर्म्स में ये अरे ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है, ये दिस एंड दैट, वो तो कुछ नहीं, कोई तो खुला है. सो पूरा एडवांसमेंट में to go beyond that and to accept. That's the point. This is the reason why most countries have done it long time back, and India repealed Section 377 now. And the normalcy of that is, they're also exactly the same as us. That's the point. This is what on a objective top angle level, I feel strongly. But on a personal level, I have a problem because I love both of you and you love each other, so I can't get any of you. So that's complaint to that fucking God. Thanks to you. On this note, I just want to a request from me and all your fans and anyone who's watching this to illustrate the love you show to each other by doing one lip lock, which will make the yeah, on an emotion lip lock. No. I already did it in the beginning. Sir, you have watched it so many times. You're not over it. So release Still want to watch more of it. Lip lock, yeah, nose lock, jo bhi hai, okay, I respect your privacy. I'm saying, yeah. No, touch the nose. I already kissed in the film. What's the big deal? I mean, this is also a film. This is just a camera. Already it has happened there. Yeah. Okay. Just see, if you don't do it, I cannot sleep and all of us cannot sleep. And ye mat karo yaar. Please. Okay, we're doing it. Yes. Concentrate. Yes. Out of character. Naina, you're out of character. If you do it with conviction. Do it with conviction or don't do it. ये क्या चल रहा है सर? ये conspiracy. Okay, now silence. Everybody silence. Everybody silence. Do it with passion. Don't do it then. Don't do it. सर ऐसे किस नहीं होता, पहले फील तो करने दीजिए सर. Okay. I give you all your time. You take your time, but once you did it, you should do it as seriously as the film. Okay, now I'm silent. I'm not going to talk. And don't giggle. I don't know if you can still see me though. You're just spoiling the moment. You are spoiling the moment. I just dislike this. Can you please, you talk about your feelings for yourself, you're talking about your problems. Girl, Naina. First of all, you're a main character, dominant character. I want to see that. Okay. Okay, sir. Choreography. I don't. Yeah.
That is what people do to a dog. This is called no. What is called the 1970s case when hero and heroine kiss. There is one flower comes in between over the lips, or they go the drink and all that. Okay, fine. I'm not going to force you. That's not the point. We did it. मेरे को 70s का kiss मत दो sir, please sir. Yeah. इसके आगे देखने के लिए 8 तारीख को Okay. I like that. Now you got the point. Now if you want a real kiss, see dangerous. That's what he's saying. Yes. Kiss is ज़्यादा. Yeah. No, I am satisfied now. हमारा असली किस देखना है प्यार से, इंटेंसिटी से, हमारा जो फीलिंग्स है, हमारे कैरेक्टर्स के हिसाब से. आप डेंजरस को देखो थिएटर में अप्रैल 8 को, उधर मिलेगा. इधर क्या पूछा है राम गोपाल वर्मा, बड़े स्क्रीन पे देखो, because now everybody is watching us on phone. वोडका पी के पूछ रहे, तेरे वास्ते हम नहीं करेंगे. मैटर क्लोज. ओके, थैंक यू वेरी मच. I love you guys. I love you so much. I want to thank you so much for trusting me. No, that's not. And आपके वजह से हमने किया है बहुत बार. What? So you can't say that. What? मेरे लिए किस नहीं करोगे, आपके लिए बहुत बार हम दोनों ने किस किया है. That's a fact. You can never disagree. It's recorded fact. पूरी इंटरव्यू के पहले मैंने आपको एक बात बोला. I am interviewing as an audience, not as a director. And you kissed for, not for me, for the film, for the script, for the scenes, for the character. Okay. But I am happy that you're not doing that. Okay. We decided we are doing it. We don't want to disappoint you. But do it with passion. Don't do it just like that. No, sir, passion नहीं होगा. We will do a lip-to-lip kiss. Okay? See, no. Before you do that, I just want to tell you something. No. A kiss can be with a fucking dog or a child or a flower or some father. A kiss between lovers is different. Kiss is not about... But honestly, I'm telling you, I don't want you to kiss now because I want to see the kiss in the theater on the big screen. Yes. Point. Yes. I want to see you kiss. Because you obviously in a live chat you're getting embarrassed. I want to see the kiss from the emotion and the intensity of the feeling, the way it is. Yeah. But you not kissing, and I want to buy a ticket and sit in the theater and watch you guys kiss. That's exactly what we want. So much, though you love each other much more than you like me. So because love me is a very okay, no problem. And we will leave now and in the context, and since we are not on the air and you both are alone, you can continue whatever you want to do, and I will imagine what you guys are doing and having it like what do you call? I am like a Devdas because both my Parus are in love with each other, which is interesting because suppose let us say Kali story or Devdas Parvati, and they were great lovers, but in case they lived very close and suddenly if Anarkali and Parvati fall in love with each other, what will Devdas do? Chandramukhi and Paro. What? Chandramukhi and Paro. No, you're not understanding. You know, Devdas and Paru are in love, Salim and Anarkali are in love. If they both live next door and Anarkali and Paru fall in love, what will Devdas and Salim do? That's I think probably like Devdas, what Devdas did. Then that is what will become Dangerous 2.0. We'll come to that later. Thank you very much. I enjoyed so much, and you enjoyed. We enjoyed it so much. After I
get off this because you both are at the same place. Bye. Naina, I want to thank you so much for doing this role with so much of conviction. And Apsara, I want to thank you for, in terms of, having the guts to accept this role. And on that note, cheers. Cheers for Dangerous. Cheers. Cheers. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank Good you. night, everyone. Good night. Thank you Good for night. having us.